सो हमारे पास yesterday we talked something about probabilities. अब ये है कि in quantum mechanics how do we when we talk of probabilities which was departure from certainties. अब क्वेश्चन ये है कि how can we calculate those probabilities in quantum mechanics, है ना? So there is a first we have some a bit of how we relate probabilities as an idea, then we can just go forward. So if you in your earlier classes you might have studied probability, है ना? आपने पढ़ा होगा ना, sample space and other things, है ना? तो yesterday हमारा ये था कि when we talked about what we said, we talked of we used a certain term हमने use की थी. The term was, if we remember, we had an expectation value. We had used a word called expectation value. So expectation value is sort of the way you can see it. So how a wave function will evolve in space and time, psi, evolution of psi in space and time. That's the expectation value. And we had a particular interpretation of probability that was called frequentist interpretation of probability, which you have been studying, है ना? तो how do we see कि एक हमारा एक average behavior होता है ना? Average behavior, for example, in this room there are 5 people, है ना? Or 6 people, or 7 people, or 14 people, for example. So हम कहेंगे कि average height कितनी है एक आदमी की. So we'll just fundamentally first categorize, for example, number of people having, for example, height 5 feet, वो 2 होंगे, for example. Number of people having 7 feet, they will be 3 each. Number of people having 6 feet, they will be 4. Number of 8 people having feet, so there will be 1, sort of. So how we are going to see it? So we are going to see 2 into 5 plus 3 into 7 plus 4 into 6 plus 8 into 1 divided by 1, 2, 3, 4, है ना? ठीक है? So it will come out 10, is 41. It's like जो भी है. So it will come out the average. What's the average behavior of it? But अब इसमें यह है कि normally हम क्या करते हैं कम, क्योंकि इसमें sample space में multiple है ना associated. So it will come as a factor outside. Normally we will take, if it's 1, for example, अगर height है ये है, it's 5 feet, 7 feet, 6, so it will be 5 plus 6 plus 7 plus 8 divided by 4. So it will give us average height equal to 6 by 11, 18, 26. 26 को 4 से divide करो, 6.4 कुछ average. But here we don't have individual जो है ना, individual भी different के होंगे. This number of heights having 4 feet, maybe 5. So it may have so we will have sort of variance. We will have so we have to calculate that variance or that probability which will constitute for us expectation value. So here we are not the variables जहाँ पर जो होते हैं they are random variables, है ना? The random variables की हम probability calculate करते हैं और we can do it in a expectation value. But here our interest is that of इसी को actually जो average values ही हैं उसी को in quantum mechanical language हम कहते हैं average value.
In quantum mechanics, we call it expectation value. But modulo the fact in normal जो average में तो ये normal आएगा. But in this average values, you have to also calculate the individual जो है ना उसमें वो sample space. They may be also of different varieties. तो इतना फर्क है. उसको हम कैसे calculate करेंगे? So this understanding of statistics we have to import in how we have to calculate the expectation value of wave function psi. So क्योंकि हम totally we are involved in psi square है ना निकालते हैं. Which psi individually is a complex value. तो probability cannot be defined for complex quantities. Probability is defined for real values. So that's why we have psi star is modulus of psi square हम निकालते हैं. इस तरह हम intensity of light निकालते हैं at a given जो स्क्रीन पे वहां से कोई आती है इंटेंसिटी है ना ऐसे आती है. तो इट्स proportional to the square of the intensity of light is proportional to the square of the intensity. उसी का ये है कि wave function square of wave function. अब ये है कि we'll do one thing. हम कहते हैं हम जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं वहां स्क्वायर है ना वी आर गोइंग टू टेक एक हो गया एवरेज वैल्यू. Average value का square. The other is square of the average. These are two things. Average of the square and the square of the average. Average of the square is, for example, दो आदमी हैं, एक की हाइट 1 है, दूसरी की हाइट 2 है ना? तो एवरेज का स्क्वायर क्या आएगा? 1 + 2 डिवाइडेड बाई या 1 प्लस हम कहेंगे 3 फॉर एग्जाम्पल. एक की हाइट 1 है दूसरी की हाइट 3 है. तो एवरेज वैल्यू किसका क्या आएगा? 1 + 3 बाई का स्क्वायर. सो इट विल बी व्हाट? 4. स्क्वायर ऑफ द एवरेज क्या आएगा? ये आएगा बेसिकली 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना. स्क्वायर ऑफ द एवरेज क्या आएगा? पहले हम एवरेज निकालेंगे. इसका एवरेज क्या आएगा? 2. ये भी 4 आएगा. सो इन केस 1 and 3 स्क्वायर ऑफ द एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द स्क्वायर. बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस. इट इज नॉट. If you calculate generally, the square of the average is not equal to the average of the square. So it's also one of the indicators of how we can calculate the probabilities. फिलहाल आप याद रखो. We have some. We will not study it in detail, but at least as an idea. इसी को हम कहते हैं variance भी. क्या कहते हैं? So for example, if you take for example some another number, for example 1 + 2 + 3. तो इसका क्या आएगा? एवरेज वैल्यू क्या आएगा इसका? 3 + 2 + 1 हो गया 2. दैट विल बी 4. स्क्वायर ऑफ द एवरेज क्या आएगा? नहीं एक हो गया इसका स्क्वायर. एक हो गया एवरेज जो लास्ट में निकला ना उसका स्क्वायर. एक हो गया जो अंदर से पहले एवरेज करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे. गॉट माय पॉइंट? 1 + 2 + 3. तो इसका क्या एवरेज आएगा? हाँ इसका आएगा 1 + 4 + 9. वो कितना आएगा? 9 4 13 and 14. 14 by 3. So it will come out to be 4 point कुछ. So the point is, so कुछ कम ही फर्क आएगा है ना. So since expectation value है psi square, so we calculate variance. Variance हम calculate करते हैं in terms of average of the square. इसी को हम denote करते हैं by sigma. So it's sort of root of, for example, J square is the probability square of the average minus average of the square. ठीक है. So this as a quantity हम कैसे निकालते हैं variance of a given quantity.
So in our case, variance may be how we can see how the wave function psi evolves in space and time. उसकी probability कैसे निकालते हैं? ठीक है, हमने if you remember कहीं पर हमने कहा था psi is equal to C1 to psi I goes to 1 to n, है ना? ये आएगा C1 psi 1 plus C2 psi 2 plus C3 psi 2. उसका फिर जो ये C1 C2 C3 they are called the coefficients. इनके स्क्वायर्स हम निकालते हैं ऐसे 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 and they should come out to be 1. So ये है ना इसका psi 1 psi 2 psi 3 क्या आएगा? So we are going to relate it how we can calculate the these things. फिलहाल आप you just have a bit of to say only one thing, that we have to calculate the evolution of wave function psi in terms of some probabilities or in terms of some expectation values, and how expectation values are basically average values, and how average values are calculated. How average values are for random variables is like this. And now how we calculate them for a particular state psi, we will do it by and by. Okay? And this interpretation is known as frequentist interpretation of probability. For example, we have some assumption. Yesterday I also said that if you have a dice or if you have a coin, तो हम कहेंगे जो each probability अगर dice की होगी ना, अगर उसके पास 6 है ना 1 2 3 4 6, तो एक की probability 1/6 होगी, दूसरी की probability 2/6 होगी. मतलब each क्या 1 आएगा, it will be 1/6, 2 क्या आएगा, it will be 1/6. ठीक है? So dice this it will not be loaded. 2 ही ज्यादा आएगा या 3 ही ज्यादा आएगा. या कॉइन अब ऐसे करेंगे 50-50% है, 50% हेड आएगा 50%. अब मसला ये है कि if we say the dice is loaded, हमने इसको थोड़ा टिल्ट किया ऐसे, it's not necessary things will change. और अगर हमने कॉइन को भी टिल्ट किया ऐसे, it's not necessary it will be head. So उसमें फिर एवरेज वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? It may not be 50-50, it may be 48-52, ऐसे कुछ 30-70, है ना? अब उन केसेस में हाउ कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, वो हमारा काम है. सो द पॉइंट इज टू मेंशन हाउ इन क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट, एंड हाउ वी हैव टू गो टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस वेव फंक्शन स्टेट psi. We have to go to our rehash, our memory, how to study probabilities and how to calculate expectation values or average values, and that understanding has to be coupled to this to calculate the wave function psi. ठीक है? So it's an exercise हम कैसे calculate करेंगे, which we do by and by. अब ये है कि in today's class what we are going to see it. So in the same way हमको there is another thing called so I'll not will study it in detail. थोड़ा सा normalization, how we calculate normalization of the function, how we normalize a given wave function psi star, वो हम कहते हैं इसको not 1. तो कोई स्केलर होगा यहाँ पर. there is also something called normalization. The way we calculate expectation value, in the same way how we normalize a given wave function. Okay, this is also another thing which will gradually. Now we are going to back. So how we are going to see these quantities, these probabilities, how we are going to relate them in coordinate space and momentum space. How we are going to use again when you study quantum mechanics. Quantum mechanics में before you are going to see exactly nature क्या है, मतलब how the wave particle duality manifests in lab or in experiments. तो जो quantum mechanics की language है ना, it is I use the word अंग्रेजी में है, it's coached समझते हैं in mathematical formulas, mathematical formulas. इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं ना लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट.
आप कोई बात कैसे कहेंगे, है ना, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आप खाना कैसे इसको आप प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो समटाइम्स लैंग्वेज ऑल्सो बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट। आप कोई बात कहना चाहते हैं, ठीक है, आप ये कैसे कह रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी मीनिंग ऑफ द थिंग गेट स्पेसिफाइड। हम क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर। अब वो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो एक्सप्रेस इन ए मैथमेटिकल फॉर्मूलेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि वो यूज फोरियर एनालिसिस। वाई फोरियर एनालिसिस, जो मैंने कल भी कहा, बिकॉज इट्स बेसिकली यू आर सुपरपोजिंग दीज वेव पैकेट्स। हाउ वी ऐड वेव्स, हाउ वी एड वेव्स ऑफ सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है ना, वी आर गोइंग टू सुपरपोज। वेयर द सुपरपोजिशन इज मैक्सिमम, वही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव एग्जिस्ट्स, वही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, जो भी है सब। अब ये सुपरपोजिशन कैसे हम एडिंग करेंगे डिफरेंट वेव्स का ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, तो इसी को हम कहते हैं देयर इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसको कहते हैं फोरियर एनालिसिस और वेवलेट थ्योरी, ठीक है। In the same way, there is another branch of mathematics, उसको कहते हैं वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। And there is also another thing called probability theory, जो आज हम थोड़ा सा। So these three branches of or three chapters in mathematics का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? How we can express quantum mechanical language. Sometimes ये हो जाता है कि the tool becomes impediment in understanding a theory. जैसे you will go and you book in quantum mechanics, आपको math लगेगा, you will see this Fourier analysis, you will just, it becomes an impediment in learning. You leave that idea. So that these techniques or tools should not become impediment in trying to approach a given subject. So simultaneously one should also study these three techniques or three methods, such that ultimately हम क्या कर रहे हैं, so that we will not have any difficulty in what we are describing a physical theory. Just like a classical mechanics, हमारे पास theory है, it explains motion of planets, motion of stars, motion of fluids, है ना, जो भी bridges जो भी आप बनाते हैं, it's based on mechanics. In the same way, जो subatomic world की theory है, whether it's laser, whether it's atoms, molecules, है ना, electrons, तो उसकी theory है। तो जिस तरह हमारे पास कारपेंटर के पास होते हैं, वो क्या होता है ना, हैमर होता है, ये होता है, वो होता है, इसी तरह फिजिक्स के जो टूल्स होते हैं दे, और क्वांटम फिजिक्स के टूल जो होते हैं, दे आर वेक्टर स्पेसेस, दे आर प्रोबेबिलिटी एंड दे आर फोरियर सीरीज। तो इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से डरना, once you see something, you just go and you book in Fourier analysis and these three things and try to cover up. Why Fourier analysis? For example, I previously also said that there are some things you express in one space and उसका कोई analog होता है in the ambient space, ठीक है, inverse. You define a function in some space and you map it to some analog space. So from this space to that space, there is a function. You relate two functions by some space, by some function. And it's always possible to go from one space to, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम स्पेस है एंड पोजीशन स्पेस है. यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू कम बैक एंड फोर्थ, हाउ टू कम एक स्पेस से वापस कैसे जाना है, उस स्पेस से वापस कैसे आना यहाँ इस स्पेस पे. इट हेल्प्स अस इन लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. ठीक है, सो अब ये है कि सिंस वी हैव डन प्रोबेबिलिटीज, सो नाउ if we are going to probabilities in coordinate and momentum space. So first हमको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटीज और दोज एवरेज वैल्यूज और दोज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, है ना. So you need to have some knowledge of this. But here in coordinated
momentum space. So we have to take the recourse to Fourier analysis. So there's a good at the end flap end of this book there is some इसने ये दिया है Fourier analysis का थोड़ा बहुत or any book you can go. So if you follow this book, he has given appendix. You can just see things. So अब ये for a state so मैंने और एक चीज मैंने कहा था नॉर्मल हाउ नॉर्मलाइज अ गिवन फंक्शन नॉर्मलाइज मींस साइज स्टार इज इक्वल टू 1 अभी कभी कभार इसमें कोई स्केलर भी अटैच होता है ठीक है हाउ नॉर्मलाइज अ गिवन फंक्शन सच दैट साइज की प्रोबेबिलिटी ये होगा सो देयर इज अ प्रोसीजर दैट्स नोन एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ फंक्शन कि कोई भी स्पेस में अगर कोई भी ये इट्स प्रेजेंस इज देयर इन सम स्पेस ठीक है दैट्स व्हाई इट्स इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट्स इट्स नॉट एन ओपन एंडेड व्यू है ना इट्स इसका कुछ है क्वेश्चन है कि व्हेन इज अ वेव नॉर्मलाइज्ड व्हेन इज अ वेव तो उसी में हमने कल कहा था कि इट्स एन L2 स्पेस जिसमें वो स्पेस नॉर्मलाइज होती है और जिसमें स्पेस हमारे पास जो साइज स्टार है ना स्क्वायर ऑफ द वेव तो all spaces are not normalized so how we can go for a इसको हम कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल स्पेस भी क्या कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल स्पेस भी so we just come to this discussion so हमारा ये है कि how we can for a state normalized according to the condition 3.9 जो मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो 3 जो मैं निकाल का था मोमेंट साई स्टार साई d3r means xy that's equivalent to 1 so for a state which is normalized according to this thing so what we are saying the average or expectation value of coordinate x which is a random variable so you just see what's a random variable can take any value इस तरह discrete variables take some discrete values ठीक है अब इन क्वांटम मैकेनिक्स वी नॉर्मली आर इंटरेस्टेड इन क्वांटिटीज की एनर्जी टेक्स डजंट टेक एनी वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू अब हाउ कैन रिलेट रैंडम एंड सो फर्स्ट वी से हाउ वी हैव अ रैंडम वैल्यू पहले हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने दिखाया था अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर ऑफ दिस माइनस mean of the square so this is a normalized function d3r this x may be a scalar or जो भी है इस तरह expectation value of the position value ये तो general x है you can see it as psi square d3r so any arbitrary अगर कोई भी arbitrary function है arbitrary function the expectation value can be fr psi square d3r or it might be equivalent to psi star f of r psi of d3r है ना psi star ये ना f ये psi star को also आप लिख सकते हैं in terms of psi star psi है ना अलग अलग किया हमने because psi star is equivalent to 1 so
So what we are going to do in next 2-3 steps, we are only going to represent how we can write this quantity in something called a position space or in momentum space or in a momentum space, or how we can go from a position space to momentum space and vice versa. But position and momentum space में क्या है? These are these variables. Expectation value of this for a state normalized. So वहां पर हमारे पास जो ये है ना, you are going to from position space to momentum space vis-a-vis this wave function psi, है ना, which is normalized. तो इसको हमको देखना है हम कैसे इसको पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस में कैसे करते हैं. तो इफ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट क्लास में क्या था कि वी डिपेंड कि प्रोपेगेशन फाई पी को इन टर्म्स ऑफ साई डिफाइन किया था, एंड वी कैन ऑलवेज गो फ्रॉम फाई पी व्हिच इज मोमेंटम टू साई, एंड वी कैन गो फ्रॉम साई टू इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फाई पी. ठीक है. सो इफ वी यूज दैट वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूरियर स्पेस, psi of RT will be तो इसलिए थोड़ा सा डरना नहीं. यू आर लर्निंग ए टेक्निक. इट्स नॉट लर्निंग ए टेक्निक. यू हैव might already learn a technique in mathematical physics course, but you should know how to apply this technique in our understanding of quantum mechanics. So अगर psi कोई function है, wave function है psi, so how we can write it in terms of phi in the momentum space? We know it. It's written as iota by h p dot r into d3p. d3p means momentum space. अब ये है ना, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाय एच पी डॉट आर, ये है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? e to the power x, that's cos of x plus iota sine of, it's cos u plus iota sine v. It's basically wave. It's a complex wave which is representing a wave function psi. ठीक है. But it's in t3p momentum space, 3-dimensional momentum space. अब ये है कि आप phi फंक्शन को कैसे रिलेट कर सकते हो साई में. वी ऑल्सो से हम को फाई एंड साई, फाई को यहाँ लाएंगे, साई को यहाँ लाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स हो जाएगा इसका. इट विल बी माइनस आयोटा एच. सो फाई ऑफ पीटी इसको कहते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. So you have here position space. So we have here R. ठीक है. Position to momentum space. D3P हो गया momentum. D3R हो गया. ये हो गया position space to momentum space. Momentum space to position space. So once we do this thing, तो यहाँ सिर्फ यहाँ plus iota है, ये minus iota. Psi goes to phi, phi goes to psi. तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल वेव है, इट विल कम आउट टू बी माइनस इन द पोजीशन स्पेस. यहाँ प्लस है इन द मोमेंटम स्पेस. Here k is equal to p by h is conjugate Fourier variable but the analogous relations हमारे पास थी जो हमने, if you remember equation 2. हाँ, if I rehash, मैंने क्या था 2.16 ऐसे हमने लिखा था स्टार्ट में, x y z 0, it's at time 0, psi r 0 was basically 2 pi
phi of k e to the power iota k dot r d3 की। इसी तरह phi of k हमने लिखा था ऐसे, इसी तरह psi of r we have seen it how we can relate phi with psi, यहाँ पर psi with phi, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, but here it's k all, since it's x y z t is 0, that's why minus omega t यहाँ नहीं है. So having this understanding of this thing, what we are going to do, that's fine. So both phi and psi will depend upon t. Phi and psi depend on t. That's fine. T and t is a parameter. T is a parameter. This is position, this is time. Means psi का है ना एक, मतलब how evolution of wave function psi in space and time. वहीं से निकालते हैं ना Schrödinger equation. d psi by dt is equal to second order d2 psi by dx square d2 psi by d. So second order differential in space का रिलेशन यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड साइड में Schrödinger equation है d psi by dt. That's the time dependent Schrödinger equation, है ना? So in the same way you can also say it like this, psi of r t. तो वही कह रहा है time phi and psi depend upon t, such that if we relate phi and psi is basically wave function, but इस wave function को हमने by Fourier analysis हमने इसको in momentum space represent किया, such that you can always go from psi to phi and phi to psi, and psi को हमने in terms of position space, this momentum space, you can always go from this space to this space and this by, so you can always have crisscross back and forth, because it helps us why we are going to use the variables in terms of position and momentum space, rather psi का evolution xp in terms of position and momentum क्यों करेंगे, ठीक है, which will be clear more and more. So for a special case of free particle, with the momentum p को हम ऐसे h की, है ना, k is 2 pi by lambda is, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda is h over mv ऊपर जाएगा, उसी को हम in terms of momentum लिख सकते हैं, है ना, 2 pi h over mv, h over 2 pi कट जाएगा, तो you can also write it becomes वापस आएगा इसके बराबर. So phi pt को हम ऐसे लिखेंगे, phi pt. So we have defined psi in terms of phi. Psi is position space goes to momentum space. Phi को हम, if the propagation has started at time t is equal to 0, you can also have minus omega pt. Where phi of k0 is simply denoted as if the propagation has started from at time 0. Now we will do one step. 2-3 steps we are going to do, then we'll stop. But there will be an by the end we'll have an exercise
which you should be able to do or attempt. अब यहाँ हम क्या करेंगे काम, वी आर कमिंग बैक टू आवर, जो हमने कल श्रोडिंगर इक्वेशन की, श्रोडिंगर इक्वेशन की हमने क्या किया था, हमने वो 3.1 हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी, हाँ, iota h. So we are coming back to our Schrodinger equation psi. So psi को ही हमको रिप्रेजेंट करना है कहां पर, just see here, psi को ही हमको रिप्रेजेंट करना है in position space as well as momentum space. So d psi by dt किसके बराबर है, शाबाश, it's h square by 2m del square psi rt ठीक है. So this is Schrodinger equation, you know. अब you are coming back to our representation in terms of this Fourier space or position and momentum space में हम so iota h can it be written as, so we are coming d psi by dt, d psi by, जो psi है ना, psi को हमने इन टर्म्स लिखा दिस 1/2 पाई जो भी है हमारे पास, या psi को, so if you write it in terms of this thing, psi को ये है ना हमारे पास this definition of psi. So what we are going to write, so but if we want to differentiate it, it will be d psi by dt आएगा ना. टू पाई to the power 3/2 exponential of iota h minus p dot r d3r, ठीक है. और अगेन नाउ वी आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट, जो हमारे पास ये है ना d psi by dtr, वी आर गोइंग टू यूज दिस श्रोडिंगर इक्वेशन को यहां पर सबस्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट हमने क्या किया, वी यूज दिस डेफिनेशन psi इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेस, मोमेंटम स्पेस, ठीक है, did it here. But further हम क्या करेंगे काम, and phi को in terms of psi लिखा हमने, and further what we are going to do, जो हमारे पास psi by d psi by dt है, evolution of wave function psi है, इसको we are going to substitute this Schrodinger equation here. So what we will get, we will get like this, iota h d phi pt integral of, तो ये एक्सपोनेंशियल हम थोड़ा सा पहले लाएंगे, and we are going to use this here, minus h square by 2m ठीक है, psi of or t dtr. So we have represented this quantity, this phi. So हमने पहले phi and psi की different form ली, psi को in terms of phi लिखा है, how we can write phi in terms of psi, ठीक है, in position space as well as in momentum space. So first we have done this here, then here फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला d psi by dt, whether in position space or in momentum space. But yesterday our understanding of Schrodinger equation ये थी कि we got it, Schrodinger equation का इसका form ये. So now we are basically trying to write Schrodinger equation in position space or momentum space. So we are going to substitute it here. So we have written not psi here, we have phi का in position space and time. अगर हमको psi का लेना है, that will be
psi or of t in position in time. अगर phi है that's momentum in time. So first we will take phi को Schrodinger equation का फॉर्म ये आएगा, ठीक है. So that's it. So we'll take 2 steps and then stop. Up or we'll stop here. अब ये है कि now our in the next class we are going to it will be a how to calculate this integral. How to calculate इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहले इस टर्म को करेंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस जो भी है माइनस आयोटा बाय एच पी डॉट और एच स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई आर टी साई ऑफ आर टी d3r प्लस सेकंड टर्म आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज दिस थिंग. अब इंटीग्रेशन कैसे इसको करेंगे? यहाँ अंदर डेल स्क्वायर है ना, 2 बार करना पड़ेगा यूवी फॉर्म. सो इट्स ए जॉब बेसिकली, इट्स ए इस इंटीग्रल को हम कैसे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस, ठीक है. सो व्हाट आई गोइंग टू समराइज व्हाट वी डिड. हमने पहले साई का लिखा, साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है. तो उसका हमको हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन पोजीशन स्पेस और इन मोमेंटम स्पेस. फर्स्ट हम व्हाट वी डिड, वी वेंट टू द ओरिजिनल फंक्शन, हाउ रिप्रेजेंटेड साई इन टर्म्स ऑफ फाई एंड फाई इन टर्म्स ऑफ साई विद द मॉडल ऑफ द फैक्टर ऑफ. वहां इन व्हेन वी डिड पोजीशन इन मोमेंटम स्पेस, एक में एक्सपोनेंशियल माइनस आता था, दूसरे में प्लस आता था. अब अगर हमारे पास साई डिफाइंड है, देन उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया डी साई बाई डी टी. जो डी साई बाई डी टी है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया ओरिजिनल हाउ डिफाइंड श्रोडिंगर इक्वेशन डी साई बाई डी टी किसके बराबर है, उसको फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है. नाउ अब हमारा काम ये है कि हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है. सो बिफोर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल इट्स ए जॉब. तो आप थोड़ा सा व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इफ यू हैव दिस बुक, सो यू कैन सी द अपेंडिक्स फोरियर एनालिसिस डेल्टा फंक्शन. थोड़ा सा यू जस्ट हैव सम बिफोर फोरियर एनालिसिस किसको कहते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है. स्टॉप.